Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Or yes, before time, यार कभी कभी before time भी हो जाते हैं. Definitely, that is part and parcel of the game. Sometimes before, sometimes later, or before Q, because there is a lot of excitement. In fact, भाई crazy number of streams होने वाले because it is EPL time. EPL time ही नहीं, even Bundesliga भी है this weekend. तो सब लोग जुड़ जाइए और जो भी जुड़ा है भाई, please like. Definitely helps if you like the stream, if you share it. I have shared earlier on my Instagram as well as my Twitter. If you can just retweet and like, or of course my community post, it'd be brilliant. Shay Patel in the house, कैसे हो भाई? Boring days are gone. बिल्कुल बिल्कुल. और football weeks मैंने देखा आपका message. Well, let's see. Arsenal don't have a great record. We'll be talking about each and every, at least the top 6 clubs. Let's put it that way. और बाकी predictions लेंगे. यहाँ पर मेरा लाइट चल गया. क्या शुरुआत हुआ है. You know what? It's been raining cats and dogs यहाँ पर. So you guys have to excuse me थोड़ा सा in the camera for a few minutes. लेकिन hopefully it comes back. And we'll still continue. The show must go on. So we'll still continue. In case आप नहीं सुन पा रहे तो मुझे बता दीजिए. I'm hoping. Let me just check quickly. I hope that's okay. I'm just trying to find my phone. Football is back. Let's go. बिल्कुल. And yes, people who have joined. भाई आ गया चलो. इससे पहले कि यू गाइस थिंक यार अपने आप से क्या बता रहा है ये. आई एम बैक. यस. So Arsenal don't have a great record in opening day, especially in London rivals. Okay, yes, we'll be discussing about head-to-heads as well. Not just that, थोड़ा सा फॉर्म भी देखेंगे, थोड़ा सा predicted 11 भी देखेंगे, and of course FPL की थोड़ी बहुत बातें होगी आज. कल थोड़ा सा डिटेल में करेंगे FPL की बातें. That's the plan. And everyone, again, do not forget to like the stream so that we have more people joining in, trickling in, so that भाई हर एक गेम का बेसिकली प्रेडिक्शन मिले. और क्यों यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ यहाँ पर, स्पेशली श्रेय और फुटबॉल विद कॉमेंट आपके लिए, एंड ऑफ कोर्स सब लोग के लिए भी, बिकॉज इट्स ओपन टू एवरीवन. भाई एक बोनस मिलेगा बीइंग अ मेंबर. यस, फॉर मेंबर्स देयर इज गोइंग टू बी बेसिकली अ प्रॉपर प्रेडिक्शन लीग. यस, तो आपने क्या करना है, आपको बेसिकली लाइव चैट में तो करना ही है. कमेंट्स कर दीजिए आपके बेसिकली क्या होने वाले प्रेडिक्शंस. वन बाय वन हम गेम में जाएंगे. लेकिन इवन अदर्स भाई, इफ यू बिकम अ मेंबर एंड यू आर प्रेडिक्टिंग इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, नॉट द लाइव चैट, ठीक है. आप बेसिकली वीडियो खत्म होने के बाद या इवन राइट नाउ यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द वीडियो. सो अगर आप करते हैं, ये 10 फिक्सचर्स है फॉर दिस वीकेंड एंड दीस आर गोइंग टू बी द रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल, I can say maybe Everton versus Chelsea. This is going to be the result. 2-1 or whatever, 1-2, whatever you want, right? तो वैसे आप लिस्ट में कमेंट कर दीजिए. I will have a prediction league. And for members, because यार थोड़ा तो बोनस मिलता है with members, because yes I know members के लिए especially I was planning to do a member stream, लेकिन यार we have not many members right now to do a member stream. So the idea is if we get to about 50 members, which hopefully we should by the end of this year or even before, let's actually get a prediction league. And of course ये motivation even for you guys to become a member. So it's a win-win hopefully. And yes, of course there will be a prize, लेकिन हाँ, the condition थोड़ा तो रखना ही पड़ेगा यार, क्योंकि it's a win-win. सो 50 मेंबर्स हो जाए और 50 मेंबर्स का प्रेडिक्शन लीग होगा. एवरी प्रीव्यू स्ट्रीम जो होगा ना गेम वीक का, यू हैव टू जस्ट कमेंट बिलो इन द वीडियो, ठीक है, क्या होने वाले द स्कोर लाइंस, ठीक है. एंड देन वी विल हैव अ स्कोरिंग सिस्टम और हम पब्लिश करेंगे ऑन अ वीकली बेसिस इन अ कम्युनिटी पेज और बीट इन डिस्कॉर्ड सर्वर. हाँ, उससे ये भी याद है भाई, सब लोग डिस्कॉर्ड सर्वर भी जुड़ जाइए. एंड एफपीएल का लिंक भी है इन केस यू हैव नॉट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड विल कम टू द मैचेस वन बाय वन. रिसेंटली मैंने आगे टू बैंगलोर, अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हुआ तो मिलना चाहूंगा आपसे. बिल्कुल क्यों नहीं. फुटबॉल इज बैक. यस अली गेमिंग, बिल्कुल. मैनचेस्टर माइट सरप्राइज अस अगेन टेकिंग द करंट सिचुएशन इनटू कंसीडरेशन. ओके, फेयर इनफ आदित्य, लेट्स डिस्कस ऑन दैट. आदित्य बिग अप भाई, कैसे हो? Not taking is not good in my opinion, but looking forward to season. I understand Alex Johnson. And hey, that Sky Gaming भी great idea. Yes, absolutely. So again, people, जो भी भाई लेट आया उनके लिए भी है, members especially, but even everyone, take a comment करिए with the predictions as in when I'm kind of saying it, but more importantly यार, it should be in a proper comment after the video, ठीक है. Then I'll be counting you in the prediction league जो 50 members के लिए होगा, and that will win a prize as well. तो अब कहाँ से शुरू करें भाई? It is a crazy weekend of course. काफी सारे matches है, but like I think chat ने already बोल दिया यार, we are going to start from Arsenal's match. And do they start good or not? We'll look into that. But big up to Sadiq bhai, once again congratulations. I hope everything is well. And of course हम मिलेंगे as soon as you're free, whenever you're free.
ऑलवेज वेलकम, यू नो, सादिक भाई, मच लव एंड ऑफ कोर्स टेक केयर एज वेल। यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैच है क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल। यस, इट इज टुमारो नाइट इटसेल्फ, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल, एंड वील बी काइंड ऑफ कवरिंग एवरी गेम वन बाय वन। सो यार बाकी टीम्स के यार डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, विल गो वन बाय वन, विल कम टू देम एज वेल। भाई हेड टू हेड क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल किसी को याद है क्या हुआ था लास्ट सीजन में? हेड टू हेड में किसी को याद है? भाई क्रेजीनेस हैपन, यहाँ पर क्रेजीनेस मेरे कैमरा और रादर लाइट से हो रही बिकॉज ऑफ द वेदर, बट एनीवे माय इंटरनेट इज फाइन आई बिलीव। लेकिन हाँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्रिस्टल पैलेस क्या हुआ था लास्ट सीजन भाई, दे टुक 4 पॉइंट्स ऑफ आर्सेनल। यस, क्रिस्टल पैलेस हु फिनिश्ड 12th, आर्सेनल हु फिनिश्ड 5th। हाँ, आप बोलोगे 5th फिनिश की, मे बी दैट यू नो लास्ट काइंड ऑफ विक्ट्री जो हुआ था क्रिस्टल पैलेस का 3-0 वाज वेरी वेरी क्रूशियल। इट वाज अ स्पैंकिंग, प्रॉपर क्रिस्टल पैलेस ने दिया था स्पैंकिंग टू आर्सेनल 3-0, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ 2-2 ड्रॉ बिफोर एज वेल। तो हाँ, 2-2 ड्रॉ में आप बोलोगे इट वाज ऑलमोस्ट लाइक लास्ट मिनट गोल आर्सेनल का हुआ था, and then you know kind of you know Crystal Palace was disappointed, but they came back with a victory in the return leg. That was crazy, right? यहाँ पर मैं लाइट आने का वेट कर रहा हूँ people, that's why मैंने switch off किया कैमरा just for a couple of minutes, so please hold on. Oh, Syed is a member. Yeah, Syed, big up भाई, कैसे हो? Always good to see Syed in the chat, of course, or obviously supporting both the channels. That's Almighty Sports Plus and Almighty Blues FC. So please, you know, अगर आपने नहीं देखा है, please check out Almighty Sports Plus भी. And Crystal Palace was the one to surprise against top teams. Yes. बिल्कुल. Arsenal 4, Crystal Palace 2. Okay, interesting. Arsenal to win against Crystal Palace. Okay. Remember, it's an away game. Huh? और लास्ट ईयर किसको याद है भाई, फर्स्ट मैच आर्सेनल को हुआ था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, तो दैट वाजंट आइडियल, राइट? सो दैट वाज अ प्रॉब्लम, एंड वहां पर 2-0 आ गया था, आर्सेनल फेस्ड अ लॉस। बट अगेन लास्ट ईयर फर्स्ट मैच डिफरेंट था बिकॉज आर्सेनल वर मिसिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, आई रिमेंबर दैट। बट अभी आई थिंक आर्सेनल फॉर्म इज वेरी गुड। बट टॉक अबाउट फॉर्म, and again people, whoever's joining late, don't worry, I am here, I am very much here. It's just that लाइट चली गई है, लेकिन इंटरनेट का बैकअप है, लाइट का बैकअप इज लाइक क्रेजी, यू नो। लास्ट 12 घंटों में बेसिकली 10 घंटे बारिश हुई है यहाँ पर, और इट्स लाइक सो बैड दैट बेसिकली यू नो इवन द बैकअप is kind of gone, so don't worry about it. So don't as in focus on what I'm speaking is what I would request, right? I'll come back in a minute in terms of camera as well, don't worry about it, ठीक है? होता है, कभी कभी होता है। एनीवे, सो पैलेस भाई फॉर्म में दे हैव वन ओवर क्यूपीआर मॉन्टपेलियर रिसेंटली, बट जस्ट बिफोर दे लॉस्ट टू लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ प्री सीजन। लेकिन लास्ट सीजन में अनबीटन थे लास्ट 6 गेम्स में भाई एट सेलर्स पार्क। सेलर्स पार्क इज यू नो आप बोल सकते हो प्रॉपर है फोर्ट्रेस उनके लिए, बिकॉज 6 गेम्स में दे वर अनबीटन एंड दे केप्ट क्लीन शीट्स इन द लास्ट 5 गेम्स में दे हैव केप्ट क्लीन शीट्स इन सेलर्स पार्क, और वो 5 में से 3 वर अगेंस्ट वेरी वेरी बिग साइड्स, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट मैन सिटी इफ आई रिमेंबर राइट, डेफिनेटली आर्सेनल एंड आई थिंक इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो सेलर्स पार्क में आर्सेनल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट? बिल्कुल, एंड ही हैज 5 subs allowed, विल बी इंटरेस्टिंग। एलेक्स जॉनसन, बिल्कुल। नेट इश्यू भी है अंकित भाई, वॉइस ब्रेक हो रही, ओह इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो यार। मुझे लग रहा था नेट नहीं होने वाला, लेकिन कोई नहीं। अगेन पीपल, दिस इज बेसिकली आई कैन, जब लाइव जाते हैं ना, होता है कभी कभी यार, फॉर पीपल इन बैंगलोर दे माइट बी एबल टू रिलेट इट, देयर इज अ फ्लड हैपनिंग लिटरली, दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द चैनल। हम लोग ने किया है 450-500 वीडियोस, एंड दिस इज नॉट जनरल, सो प्लीज डोंट जज मी ऑन दिस। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आई थिंक आई ट्राई एंड स्पीक स्लोली सो दैट यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड, but it's just for a few minutes, and I'm hoping that you know power is going to come back, right? Let's see, as in if it doesn't come back, and I'll anyway go on, yeah, well, that's something that the show must go on, I always do that. And let's see, FPL league शुरू भाई राहुल आप कहाँ हो यार, कहाँ हो राहुल? FPL लीग मैंने हर वीडियो में शाउट आउट दिया है, एवरी वीडियो आई हैव गिवन अ शाउट आउट, फर्स्ट 2 lines में basically in the description it's there, and I've you know published it in whatever possible social media is, and you're asking me this, Rahul, come on. Anyway, much love to you for coming on, लेकिन हाँ, FPL league is very much there, please check the description, थोड़ा सा 2 सेकंड लीजिए, और एक लिंक है वो क्लिक करना है आपको, जो ज्वाइन करना, और कुछ नहीं करना। हाँ, there will be a prize, लेकिन हाँ, get us to basically you know 10k subs, that is the only condition that I have, absolutely.
Okay, so I see Syed has become members twice. Okay, आपने शायद अपग्रेड किया शायद. बिग अप भाई, काफी मतलब थैंक्स. ओ लाइट आ गई यार, चलो अभी हो गया. लाइट आ गई है, बट अगेन लेट्स सी मैन, लाइट बार बार आ रही जा रही है. इट्स यू नो व्हाट, जैसे मैं लास्ट 12 घंटों में ना, इट्स लाइक 10 घंटे बारिश हो रही है, वो भी बाढ़ जैसे बारिश हो रही है. इट्स नॉट इवन नॉर्मल बारिश, यू नो. So I'm like, what to do? Anyways, part and parcel of what we are in terms of live streams. तो चलो, रेडियो मोड क्यों यार, आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, कोई नहीं, मच लव. ओके, अगेन 30 पीपल वाचिंग, लेट्स लाइक द स्ट्रीम यार. लेट्स, वो बैटरी है, अगर लोग नहीं आएंगे तो यार इतना मजा नहीं आएगा. तो लेट्स गेट ऑन मोर पीपल, लेट्स लाइक शेयर एंड डेफिनेटली नो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है. एंड यस, मैं अगेन ट्रांसफर्स पे आने वाला हूँ, बेस्ड ऑन यू नो एक एक गेम हम लेंगे, उनके ट्रांसफर्स की भी बातें करेंगे, ठीक है. तो आदरी भाई, अगेन नहीं पता तो आप, आदरी आपको नहीं पता तो प्लीज वीडियो देखिए. अगेन मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, मैं आई गो ब्रोकन रिकॉर्ड सेइंग दैट प्लीज सब्सक्राइब टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. वहां पर एक प्रॉपर हमने एक लर्निंग एकेडमी का एक काइंड ऑफ स्ट्रीम किया था, हाउ टू प्ले एफपीएल. तो प्लीज चेक इट आउट. वहां पर जस्ट चेक आउट एफपीएल और फैंटेसी प्रीमियर लीग यू नो का प्लेलिस्ट ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस हमने किया है, और कल वापस से करेंगे. आज कोई इंटेंशन नहीं. 10 के हिसाब से तो अगले साल होंगे, ठीक है भाई. लापुल का मैसेज चाहते हैं हम अगले साल ही करेंगे 10 के, तो ठीक है. आप चाहते हो तो आप मत करिए यार, लेकिन मैं चाहता हूँ इस साल हो जाए, और मुझे पता है इस साल होने वाला है, बिकॉज आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव मी, एंड आई नो दैट आई वर्क हार्ड, आई नो दैट आई नो लॉट ऑफ स्टफ. सो लापुल का मैसेज, आई नो दैट यू आर अ हेटर, you don't need to show it much. It's okay, perfectly fine. So it's absolutely fine, bro, don't worry about it. Sorry Ankit, कोई नहीं. And चलो थैंक यू यार. बिल्कुल सही. चलो, आई एम गोइंग टू मूव ऑन बिकॉज यस देयर बी बैक टू बैक स्ट्रीम्स, राइट. देखो, in terms of Crystal Palace Arsenal, right? So coming back, they have kept clean sheets, like I said, in the last 5 against big sides, that is Palace at Sellers Park, that is, ठीक है. और last season में भी आप देखो तो you cannot take them lightly, because एक तो Patrick Vieira, he knows Arsenal in and out, right? He is a legend of Arsenal. But not just that, by he got Crystal Palace to the semi-final of the FA Cup. Yes, Chelsea beat them if you remember, right? But the difference is Crystal Palace का इस साल क्या नहीं है भाई, Conor Gallagher is missing. That is the biggest miss for Crystal Palace, in my opinion. Whatever you say, why they have, you know, whatever they have a decent squad, or Sellers Park, they are almost kind of unbeatable at times in terms of the form. फिर भी भाई Conor Gallagher was huge for them last season. Arsenal, on the other hand, they have won all the preseason games. You know, पागलपंती किया Arsenal ने. Definitely they have done signings. Chelsea, Sevilla included, भाई वो preseason game, it wasn't easy. Chelsea और Sevilla दोनों को धो डाला proper. It was a proper performance, not just the goals. ठीक है. Having said that, this is the third season back to back that Arsenal are starting with the London derby. और किसी ने comment किया था about Arsenal and London derbies and starting the season. Well, they beat Fulham एक साल. They lost to Brentford last year, as we have already spoken, right? So I don't know if it's third time kind of loss or win. You have to tell me. But injuries की बात कर लेते हैं in terms of, और ये यहाँ FPL की थोड़े kind of inputs हैं. And yes, people do focus here. अगर आप FPL खेल रहे हो तो injuries का ऐसा है, अगर if you're wanting low cost goalkeeper, do not go for Sam Johnston or Jack Butland. Sam Johnston is the new keeper, Palace new keeper from West Brom, शायद साइन किए. लेकिन हाँ, तो those two are out. लेकिन Guaita should play as goalkeeper इस weekend के लिए. तो I think इस weekend के लिए अगर if you are wanting to play a different kind of fantasy league, you can go for Guaita. MacArthur और Olise भी बाहर है, तो they have injuries यार, Crystal Palace. Apart from not only obviously they've lost Gallagher, like I said, to Chelsea. Jordan Ayew, Hudson Edward, who's quite good, or Zaha may start up front with Eze and Czech Dokore, who's a new signing as well, will be just in behind. So I think they have a decent starting 11. Like, problem wo ye with 5 substitutions again. You guys commented in the chat. I think they might just miss out on this weekend. Arsenal also missing players. They are missing, I think, Emil Smith-Rowe hasn't been fit. Yeah, he hasn't been fit. Fabio Vieira is also not 100%, I believe. Tierney be 100% नहीं, और Tomiyasu is not match fit as well. तो यार लगता है Ben White will continue at right back. और yes, again मैं लेने वाला हूँ. Oba has refused to move to Chelsea. I think Barca should keep him, by the way, or Depay as a backup forward of the season. Yeah, एक जन तो रहना चाहिए. I agree. एक जन तो definitely रहना चाहिए.
अंकित भाई नीड टू टॉक अबाउट ला लीगा सीजन. हाँ, क्यों नहीं बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. वी टॉक अबाउट ऑल 5 लीग्स. अगर आप फॉलो करते हो हमें 1.5 साल से, यू विल गेट टू नो दैट आई फॉलो ऑल 5 लीग्स. आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम years together. I've been La Liga and lot of other leagues यार, टेंशन नहीं है. अभी ला लीगा इस वीकेंड में है, तो इस वीकेंड प्रीमियर लीग है, और दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट राइट नाउ. बट we'll do different stream for different things. हम हमेशा करते हैं. Check out our playlist. Yeah, बिल्कुल. शायद so लापुल का मैसेज, this message is for you, and this is what I love about the community. यार मतलब at the end of the day, अगर आप मेरे मुंह पर बोल रहे हैं in the live stream that you will not reach 10K in this year, you know, get a life, bro. Get a life, bro, or whatever you are, man. लापुल का मैसेज. Okay, just get lost. लापुल का मैसेज. That's what I would say. But anyway, love for everyone else, Syed and everyone here. Love from Nepal. Big up, yaar. Absolutely. I hate to admit the season might be Chelsea nightmare season. Okay, fair enough. और यार जो भी बोले ना इस साल हमें 10 के सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, then you're not interested to play in that FPL. Simply put, and आपको प्राइस नहीं मिलेगा. आपको simply आप एफर्ट नहीं लो. लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है डेफिनेटली ज्वाइन करिए यार FPL. If I have made a promise, I have made a promise. But condition भी है, और that is something, there has to be a win-win, because I genuinely believe that we can get more subscribers, because मेरे जो वॉचर्स के काउंट है ना, उससे सब्सक्राइबर्स इट्स ओनली 50% सब्सक्राइब नहीं कर की है. तो आई नो, एंड इट डजंट कॉस्ट, जस्ट सब्सक्राइबिंग डजंट कॉस्ट. सो आई थिंक you can always press the subscribe button, not just for me, for every streamer out there. So I am not against any person in the community, and you all probably know that, who follow me from a long time. Anyway, so let's get back to this before I kind of go off topic again. So यहाँ पर आ जाते हैं आर्सेनल के लाइनअप पे यार. अगेन FPL गुरुस, यहाँ देख लिए आर्सेनल की प्रेडिक्टेड लाइनअप पे आ जाते हैं, और यहाँ पे टॉप 6 साइड्स के हम प्रेडिक्टेड लाइनअप शेयर करेंगे. आप लोग भी अपना बोलिए आर्सेनल की क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप होगी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, ओपनिंग गेम ऑफ द सीजन, एंड ऑफ कोर्स गेट इन योर स्कोर्स एज वेल. और ऑफ कोर्स टू क्वालिफाई फॉर द प्रेडिक्शन लीग, यू हैव टू कमेंट at the end of the video with all the scores, and you have to be a member as well. So that is something that is a benefit for members. But yeah, so this is what it is. देखो भाई, ये है आपका. देखिए, तो आप बोलोगे भाई, how dare you put Thomas Partey? Yes, Thomas Partey has been involved in things that we know that. लेकिन you know what, at the end of the day, I think Arsenal are following that thing. यार जब तक प्रूव नहीं होता, you're not proven guilty, something like that. So I think he played Thomas Partey in the last preseason game. और as per the report जो मैं पढ़ रहा है, मैंने काफी वेबसाइट्स रिसर्च किया, I think Thomas Partey is in line to actually start this game as well. So that's why I think अगर FPL गुरु सोचते हैं भाई that Thomas Partey will eventually be out of the team because of what happened off the pitch, of course he deserves it. So मे बी आप पिक नहीं करो, लेकिन फॉर दिस वीकेंड अगर आप खेल रहे हो वन ऑफ फैंटेसी गेम, देन यू कैन पिक हिम इन माय ओपिनियन. लेकिन दिस इज माय स्टार्टिंग 11 ऑफ आर्सेनल. हाँ, अगेन ESR is not playing, that's why Martinelli on left hand side, but Crystal Palace का, like I said, the front three are very strong. Apart from that, Eze is behind, Czech Dokore is quite good. तो you have certain standout players. लेकिन स्कोर लाइन क्या होगा भाई? मुझे लगता है the fact that they are missing their first 2 choice goalkeepers, and Goeta is not bad. प्लस आई नो सेलर्स पार्क पे खेल रहे, बट आई थिंक इस बार थर्ड टाइम लकी होगा फॉर आर्टेटा अगेंस्ट वियरा, एंड आई फील दैट आर्सेनल विल विन इट जस्ट बिकॉज एक मोमेंटम बन रही है. दे हैव बीन द टीम ऑफ द प्री सीजन इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म, राइट? तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ. बट स्कोर लाइन बता दीजिए इन द चैट भाई. आर्सेनल अवे टू क्रिस्टल पैलेस, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्कोर लाइन इन दिस मैच? Let me know. I think Partey is innocent. Okay, I don't know how would you say that, but anyway, just was great for City, but he was no Aguero. Fair enough. Chelsea will kick all football pundit ass after winning Premier League. Oh, bhai saab, that is some comment. Thank you for coming, and love you as well, Prakash. बिल्कुल भाई. चलो सब लोग बोल दीजिए. I hope, by the way, internet is totally fine now. If anyone is facing that issue, let me know, because पहले भी I think some users said it's absolutely fine. So दिव्यांशु बोल रहे हैं 2-0 for Arsenal. Okay, fair enough. भाई, it's a Sellers Park. You know what? मुझे लगता है that Crystal Palace will score. Crystal Palace will score, but I am going 1-2. मेरा है 1-2. That is basically Arsenal to win at Sellers Park इस बार. It is a basically Friday night game. Remember that also might be one thing. जो ज़्यादा goals होते हैं, mistakes होते हैं. First game of the season, of course. 3-1 might concede 1 goal exactly. Now Man City 13. Okay. Hello अमेय, कैसे हो? Again, do not forget to like the stream जो भी आ रहे हैं. Okay, 0-3 for Arsenal, लेकिन थोड़ा डर तो है. That's a nice way of showing डर. 0-3, लेकिन कोई नहीं.
ओके, सो पहला गेम हमने कर लिया है कवर, और यस, मतलब साइनिंग्स यार, इज नो सीक्रेट व्हाट दे हैव मेड. क्रिस्टल पैलेस का मैंने बोल दिया है. व्हिच न्यू साइनिंग्स विल कम, व्हिच नॉट. 6-0, वाओ वाओ. Again, let's see, who gets it right. And again, members, do not forget to comment all the predictions after the stream, or maybe during the stream, at the, below the video, basically, right? That's what I'm saying. So let's go to the second game. So this is going to be an early kickoff on Saturday. Saturday को हो रहा है Fulham versus Liverpool. So obviously Fulham are promoted. They have just come up, and you can say that Fulham, भाई, they are Norwich part 2. वो आते जाते वही चलता है फुलम का. Having said that, you know what, फुलम और लिवरपूल का कुछ तो हिस्ट्री है. क्या हिस्ट्री है? एनीवन रिमेंबर्स? आई डोंट नो, काफी देर हो गया है, लेकिन 2 सीजंस अगो फुलम वो देयर इन द प्रीमियर लीग, राइट? 2020-21 वाज इट. और उसमें क्या हुआ था, दैट दे एक्चुअली डिड नॉट लूज टू लिवरपूल. यस, फुलम डिड नॉट लूज टू लिवरपूल. उनका था एक शायद 1-0 लॉस था एट एनफील्ड, दैट इज बाय लिवरपूल, और फुलम बीट लिवरपूल, एंड अनदर वन वाज अ ड्रॉ. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट. हाँ, आप बोलोगे 1.5 साल हो गए बस उस बात को, उसको क्या याद कर रहे हो? बट यू नो व्हाट, it does matter. There are players still in that Fulham side. There are players still in the Liverpool side. It does matter, in my opinion. And it's the first game of the season, right? It is a team coming up. So it will be something else. Extra energy के साथ आएगी. Brentford was an example last time, right? But फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं यार. फुलम क्रेजी एंड था उनका इन द चैंपियनशिप. यस, दे गॉट 90 पॉइंट्स. 90 पॉइंट्स, 106 गोल्स मारे उन्होंने, और 106 में से Mitrovic scored 43 goals. Wow, 43 goals in the championship. Mitrovic scored, so he's essential for Fulham. लेकिन last 7 matches में, I think they have just won 2 of the last 7 matches. So that is not great form. But again, that was towards the end of last season. अभी यार उन्होंने strengthen किया in terms of transfers. For people, again, FPL gurus, याद रखिएगा, मेरे ख्याल से ये लोग खेलेंगे. वो है जाओ पालिनियो. Joao Paulinho of Sporting has come, right? Kevin Mbabu has come from Germany, and he's done well. I think last Euros, a Swiss player. He's a attacking right back. Kevin Mbabu can be a good player for them. Bernd Leno, of course, one of the costliest goalkeepers आप अगर total करो ever. But from Arsenal, he has moved to Fulham, right? And Andreas Pereira, of course, the Manchester United player, has moved as well. So 4 players है फुलम में जो they can be a little bit low on cost in FPL, so you might just pick one of them, क्योंकि in my opinion they will play, they will get their debuts. Yes, let's see. And again, people, we are talking about right now, we are talking about Fulham Liverpool. Yes, let's see. भैया फुलम का स्ट्राइकर मिट्रोविच to watch out for, बिल्कुल. 4-0 to Liverpool. Okay, 1-4 Liverpool, 5-0 Liverpool. बाप रे. 2-0 Liverpool, 3-0 Liverpool. Bhai, I know preseason, it does not really matter. But still, I would say that, you know what, it does matter to some extent. It does matter to some extent. एक होता है ना, एक फ्लो होता है. And talk about that. एक सब प्लॉट है इसमें. क्या सब प्लॉट है? Anyone knows that? Fulham Liverpool क्या कॉमन फैक्टर है? Fabio Carvalho. Yes, Fabio Carvalho was an ex-Fulham player. He has moved to Liverpool right now. So that is going to be interesting. Fulham have lost him, obviously, and Liverpool have gained him. So वो off the bench आ सकते हैं, पता नहीं. Start तो नहीं करेंगे. लेकिन प्री सीजन में फुलम ने जीता है, आई थिंक, 2 मैचेस, और एक ड्रॉ किया है विलारियल के साथ. लेकिन दे लॉस्ट टू बेनफिका बैडली. तो अभी आई वुड से मिक्स्ड रहा है उनका प्री सीजन, बट 2 विंस, 1 ड्रॉ, 1 लॉस, नॉट टू बैड फॉर फुलम स्टैंडर्ड, नो डिसरिस्पेक्ट. ठीक है. हैविंग सेड दैट, 5 बार लास्ट बार जब भी वो प्रमोट किए ना फुलम, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टैट. All the 5 times they've been promoted to the Premier League, they have lost their first match. And that's not good. That is not good. They have to change that history something, Fulham के लिए. और in 2020-21 जब आए थे ना, last time in Premier League, they failed to pick up any wins in the last 10 games. So that is why मैं बोल रहा था Fulham और Norwich, kind of भाई है. Liverpool, obviously, यार उनका फॉर्म क्या ही तो बोले यार. मैन सिटी के साथ जीते हैं. They have got the Carabao Cup, of course. So sorry, the Community Shield, sorry. And they have got the Community Shield, और वो एक एक confidence booster था at best. But they lost to Salzburg, Strasbourg, and Manchester United. हाँ, with not first team, but still there will be a concern कि यार Liverpool are not used to losing at all. और अभी यार in pre-season, don't you think it will matter? 3 losses का सामना किया लिवरपूल ने. I know Community Shield में दिखा नहीं वो, लेकिन I'm just saying, you never know.
बिकॉज लिवरपूल को इतनी आदत है जीतने की. दे हैव बीन अनबीटन इन द प्रीमियर लीग नाउ फॉर 19 गेम्स. यस, दैट्स अ रियल थिंग. लेकिन हाँ, talk about FPL people, there are some injuries. There, there will be war, no, definitely there will be war. uh, Liverpool draw, okay, interesting, nice. चलो, कुकरिया में अपडेट अभी गौरव आएंगे. अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट चेल्सी विल कम टू दैट. तो विल कम, वी आर कमिंग गोइंग गेम बाय गेम. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग फुलम लिवरपूल. सो यहाँ पर फुलम में एक्स लिवरपूल मैन एक और है. यस, it is basically Harry Wilson. Harry Wilson, anyone remembers? He is now in Fulham. Having said that, unko ek long-term injury, he'll be out for 2 to 3 months, unfortunately. There's an ex-Chelsea man as well, Chalobah, Trevor Chalobah ke bade bhai, Nathaniel Chalobah is in Fulham, but he is injured. तो आई डोंट थिंक वो खेलने वाले हैं. लिवरपूल ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ इंजरीज. आई थिंक जोटा आउट है, वी ऑल नो. 1-2 महीने के लिए शायद, प्रॉब्ली 1-2 महीने के लिए नहीं, लेकिन आई थिंक 1-2 हफ्तों के लिए डेफिनेटली आउट है. लेट्स सी इफ इज आउट फॉर मोर. Alex Oxlade-Chamberlain's out as well, or Keller. Keller is out, but I think Alisson is going to come back. So I think Alisson starts in goal for sure. Doubtful hai Konate, Shimikas and Curtis Jones. So remember these people, FPL gurus. For Liverpool, Konate, Shimikas and Curtis Jones might be out. Possibly. Or they'll not start the game at least. इतना मैं बता सकता हूँ. When Liverpool lose Klopp, excuses hilarious. Well, you know that Klopp is a winner. He doesn't like losing, and I have gone on record saying that yes, he's a sore loser, absolutely. But वही है ना, he's such a winner that he cannot lose at all. मतलब you can say. Okay, this time 5 subs will be allowed in Premier League. That will definitely help clubs with a good bench strength. बिल्कुल. So the stronger will become even more stronger. थैंक यू अजिंक्य. कैसे हो भाई? और अगेन पीपल भाई, 50 लोग जुड़ गए, होपफुली 100 लोग आ जाए. आप अगर लाइक करें ना तो अपने आप यूट्यूब बताएगा और अपने आप आ जाएंगे लोग, टेंशन नहीं है, ठीक है. और हम हर एक गेम करने वाले. वी आर गोइंग टू डू अ प्रीव्यू, वी आर गोइंग टू डू अ टीम न्यूज, वी आर गोइंग टू डू बेसिकली फ्रॉम एन एफपीएल पर्सपेक्टिव, क्या पिक कर सकते हो, क्या नहीं पिक कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स द फॉर्म एज प्रेडिक्शंस एज वेल. तो आप काफी चीज करने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ लिवरपूल का प्रेडिक्टेड 11. आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी डिफरेंट टू दैट कम्युनिटी शील्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम सीइंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, अनलेस आप लोग बोलो समथिंग डिफरेंट है. लेट मी नो ऑन दैट. बट आई फील दिस इज गोइंग टू बी द 11. हाँ, the fact that I think Konate is not 100% fit is why I've chosen this. ठीक है. तो what do you think about this, people? I think Henderson में थोड़ा सा प्रॉब्लम था in terms of the form that is showing. But again, Harvey Elliott as a starter, I don't see in the first game of the season. I have called it. Harvey Elliott for me has to be the surprise weapon इस बार, और ये आएंगे यार इस बार. He will probably replace Henderson in a few weeks time, in my opinion. आर्सेनल फर्स्ट मैच. रॉनी आप लेट आए भाई, हम वापस से वापस आएंगे. द फैक्ट इज यार आई एम लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम, सो प्लीज रीवॉच द स्ट्रीम, बिकॉज ऐसे बार बार लोग आएंगे और बार बार सबरी पूछे तो इट्स नॉट फेयर फॉर अदर्स, राइट, हु आर देयर. बट मच लव टू यू. Do remember to like the stream, and definitely we are going to summarize if possible if we are coming back, because 10 match karne bhai. I have another stream at 8:15, so I have to basically get going, right? That's the idea, please understand. Much love again. Big up to Krishna. Thank you for joining. And again, people, FPL gurus, this is going to be the Liverpool 11. I am calling it. You're seeing here. और अभी स्कोर लाइन में बता देता हूँ भाई. आपका स्कोर लाइन मैंने देख लिया. मेरा स्कोर लाइन होने वाला है लिवरपूल विल definitely win this match. Yes, away game at Fulham. Yes, it's basically the first game of the season. Fulham will be up for it. लेकिन भाई Fulham as a promoter side, you know that as much as your goals करते हैं, I think if I'm not wrong, Marco Silva is very good, but still I'm not seeing them getting that form just from the first game. I think Fulham का होगा that they will be able to score a goal, because maybe Liverpool still just about not being in that absolutely great form. Because I remember I just said preseason they've lost matches, they've conceded goals, so that is the only reason Fulham might just score with Mitrovic, right? लेकिन I am seeing Liverpool at least scoring 3, so I'm going 3-1 to Liverpool. यहाँ पर देखते हैं क्या होता है. आई थिंक वेस्ट हैम अपसेट हो सकता है फॉर सिटी. चलो आते हैं उस पर. मैड्रिड पंडित बिग भाई कैसे हो? नमस्कार आशीष, ऑल गुड टू सी यू एज ऑलवेज. आर्सेनल इज शॉकिंग एवरीवन दिस सीजन. लेट्स सी इफ इट हैपेंस फॉर रियल. केविन डी ब्रुयने क्लास, आई एग्री. 6-0 लिवरपूल. ओके, चलो मेरा 3-1 लिवरपूल है. इट्स एन अवे गेम एंड इट्स द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, सो आई वोंट सी इतने सारे गोल्स कंसीडर्ड. And the fact that Darwin Núñez, yeah, I've not put as a starter, तो हो सकता है he'll come on after say an hour mark, I'm guessing, right?
फुलम 2, लिवरपूल 2, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और यार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ फॉर पीपल हु आर देयर राइट नाउ, राइट, बिकॉज काफी लोग जुड़ गए अभी। वेल देयर इज अ प्रेडिक्शन लीग एज वेल, तो प्रेडिक्शन लीग में भी अवार्ड होगा डेफिनेटली। दिस इज ओनली फॉर मेंबर्स दो, ठीक है, बिकॉज मेंबर्स डेफिनेटली दे रिक्वायर बेनिफिट एज वेल। तो मेंबर्स का होगा एक प्रेडिक्शन लीग और द विनर गेट्स अ प्राइज। व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर और rather after every preview show that I do, game week का, you have to just comment beneath the video कि यार ये 10 मैचेस है, ये these are my score predictions, and then we'll have a weekly update on that, ठीक है। और obviously the idea is we'll get to at least 50 members, so hopefully you get us more members, and not just that, even there's an FPL, so FPL का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, so check that। एक्चुअली डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है, ठीक है। तो लॉट ऑफ चीज कमिंग ऑन, and yes there are prizes for sure, right, so in FPL as well, so यार 10K subscribers कर लीजिए, वो तो हो जाएगा definitely। Okay, nice to know that, Vedant। Crystal Palace will draw versus Arsenal, देखते हैं, nice, 4-1 Liverpool win, okay। Let's see, now let's go for the next one people, we have to move on because काफी सारे matches है। And yes, 2 मैचेस हमने कवर कर लिया है, बोर्नमथ एस्टन विला। आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन डिटेल बिकॉज कम ऑन, आई एम गोइंग टू कवर ओनली द बिग 6 इन डिटेल। लेकिन बोर्नमथ एस्टन विला आप कमेंट कर सकते हैं प्रेडिक्शन, लीड्स वुल्व्स भी आप कमेंट कर सकते हैं प्रेडिक्शन। विल कम बैक टू दीज गेम्स अगर टाइम रहता है तो बोर्नमथ एस्टन विला एंड लीड्स वुल्व्स एज वेल एज न्यूकासल नॉटिंघम, ये 3 मैचेस का आप प्रेडिक्ट कर दो क्या होने वाला है। बोर्नमथ एस्टन विला, लीड्स वुल्व्स एंड न्यूकासल नॉटिंघम फॉरेस्ट। हम बात करेंगे थोड़ा सा अभी ऑन द नेक्स्ट वन विच इज बिग वन फॉर मी, and this is Everton Chelsea। Yes, Everton Chelsea, by Chelsea fans in the house, come on get in। and of course I know Lampard haters भी है काफी, I know that, मतलब haters नहीं बोलूंगा, people calling Lampard for the sack, people calling Tuchel for the sack also, वो भी है। तो let's see वहां पर क्या होने वाला है भाई। it is Everton Chelsea। now यहाँ पर how has been Everton's pre-season versus Chelsea's pre-season। pre-season को छोड़िए, पहले क्या है, इट्स लैम्पार्ड अगेंस्ट मेसन माउंट, अगेंस्ट हिज सन, यू कैन से दैट, राइट। लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए तो लास्ट सीजन में क्या हुआ था, वी कुडंट बीट एवर्टन, यस दैट इज फॉर रियल। एंड एवर्टन साइड जो हर एक टीम से हार रही थी, चेल्सी कुडंट बीट देम। इनफैक्ट एक मैच तो मुझे याद है, इट वाज ऑलमोस्ट द सेकंड 11 ऑफ एवर्टन और दे काइंड ऑफ गॉट दैट लास्ट मिनट गोल एंड गॉट अ ड्रॉ, पहला जो मैच था। दूसरे मैच में वी गॉट अ लॉस, 1-0 लॉस हुआ। तो दैट इज सम क्रेजीनेस जो लैम्पार्ड ने किया था दूसरे मैच में, राइट। लेकिन फॉर्म की बात करें जाए तो यार एवर्टन का काइंड ऑफ मिक्स्ड रहा है प्री सीजन। 2 मैचेस दे हैव लॉस्ट, 2 मैचेस दे हैव वन, बट इवन द 1 मैचेस आई थिंक एक में उन्होंने कंसीड किया है 2 गोल्स, तो आई थिंक दे कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स। हाँ, दे हैव स्ट्रेंथन्ड बैक विद जेम्स टारकाउस्की, इट कैन सर्टेनली हेल्प। लेकिन Dwight McNeil, will he offer something different to Everton? Will he offer something like elevate करेंगे? I don't think so। बर्नली से आ रहे दोनों प्लेयर्स, Dwight McNeil और जेम्स टारकाउस्की, that's an issue। और they are missing players, yes they are missing captain Coleman, yes Coleman will be out इस वीकेंड के लिए, बट उतना ही नहीं, Dominic Calvert-Lewin, that's a big blow, yes वो इंजर्ड रहे लास्ट सीजन में, बट फिर भी they are kind of out। obviously they will miss Richarlison because Richarlison has moved on to Spurs as we know। okay, 1-1 draw बोल रहे रेने, इंटरेस्टिंग। चेल्सी का भी आते, and that's fair actually रेने, it's fair, you know why, because Chelsea, we all know in pre-season we got a very embarrassing loss to Arsenal। yes it was pre-season but यार we didn't get that। plus हमारी जो टीम में स्ट्रक्चर है अभी भी बिल्ड कर रहे हैं, I think Tuchel might change it to 3-5-2 or maybe a 4-3-3, once the personal और सब आ जाए और हम साइन कर ले। लेकिन आज के दिन में आई डोंट सी दैट ही इज गोइंग टू एक्सपेरिमेंट मच। सो मैं जा रहा हूँ चेल्सी के लिए। यस, प्री सीजन हैज बीन मिक्स्ड। हमने शायद कितने 2 गेम्स जीते, एक और 2 गेम्स हारे। हाँ, एक पेनल्टीज में था, बट स्टिल आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी बैड प्री सीजन, बट इट वाज नॉट इंप्रेसिव एट ऑल इन टर्म्स ऑफ द गेम प्ले। हाँ, एक मैच अच्छा था, वो ओडिनेजी के साथ जो मेन मैच था ना, वो अच्छा था। हमें अकाउंट नहीं करा, दूसरा बी टीम वाला मैच काउंट ही नहीं किया मैंने। बट एनीवे, चेल्सी का प्रेडिक्टेड 11 भाई, लकीली अगेन आई एम टचिंग वुड एज आई से, अभी तक देयर आर नो इंजरीज, होपफुली देयर विल बी नो इंजरीज एट ऑल। सो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ चेल्सी का 11 दिस फॉर एफपीएल गुरुज स्पेशली, ठीक है। दे आर मिसिंग, एवर्टन है मिसिंग 2 प्लेयर्स जैसे मैंने बोला है, बट चेल्सी आर नॉट मिसिंग एनी प्लेयर्स। मुझे लगता है ये होगा, यस आप बोलोगे कोवाचिच शुड स्टार्ट विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, लेकिन वही है, इन दैट वन गेम आई थिंक इट वाज जॉर्जिनो, ओडिनेजी वाला गेम मैंने लिया सैंपल प्रिंट, राइट। और वहां पे मुझे लगा यार अलोंसो एंड जॉर्जिनो डिड क्वाइट वेल,
So let them continue and not Chilwell and Kovacic. ठीक है. Apart from that, I think this is what is going to be. आप बोलोगे why Mason Mount as a striker? Again, check out my tactical video जो मैंने कल किया था live stream. उसमें मैंने explain किया है why Sterling in that free role is better, or that is what is seen pre-season as well. कुकुरे आना चाहिए, बिल्कुल भाई, कुकुरे आना चाहिए. मैं आ जाएगा यार. I have already said it in my video today. Oh yes, people who have not checked it out, please check it out. 2-0 Chelsea. Everton might get relegated this season. I'm excited for Koulibaly. Okay, definitely excited for Koulibaly. Chelsea 3-1. Yeah, DCL is always injured from last year. That's true. Do some FPL talks, bro. Yes, Bob Marley again. Thanks for coming on. I am having a different FPL stream scheduled for tomorrow, so please do join. That is on Almighty Sports Plus. Here also I am doing FPL talks in terms of basically the injuries and who are available, who are not available. But detail FPL in terms of the picks and exactly the strategy, etc. I'll be doing tomorrow, because there are 10 games. I'm kind of doing a preview show with predictions and a lot more news and form and things like that, head to heads like that. I hope we can respect that, and we'll definitely come back to it. So please subscribe to Almighty Sports Plus. It is always linked in the description below. It'll mean a lot. We are on the road to 4K there as well. And yes, we have done one stream already. We'll be doing one more stream on FPL there, right? So Everton will stun Chelsea. Alex Johnson would. Oh my God. Gaurav, as soon as the quarterfinalists give their availability, I'll be kind of rechecking with them in a couple of days time. होने वाला एक तो होने वाला show in midweek. Chelsea season will be either hit or else miss. Okay, कोड क्या है ऋग्वेद? भाई डिस्क्रिप्शन में देखिए, इट इज डेफिनेटली देयर. भाई रोज स्ट्रीम में मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. इतना मुश्किल है क्या डिस्क्रिप्शन देखना? आई डोंट नो. डिस्क्रिप्शन में पहले 2 लाइन में ही यार ऋग्वेद, कम ऑन, पहले 2-3 लाइन में ही है. मैंने लिंक भी डाल दिया है, और लास्ट 6 डिजिट्स और लास्ट 7 डिजिट्स तो वो कोड है. ठीक है, तो मैं बार बार चलो आज फिर से एक और बार कर देते हैं, क्योंकि अब पूछ रहे, क्योंकि 10 मैचेस करने भाई काफी टाइम लगे. आई हैव टू गो टू वन मोर स्ट्रीम. बट अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस स्ट्रीम पीपल. भाई ये मैंने 2 कोड डाला है, दोनों ही अलग लीग है. एक है कप का, एक है लीग का. चलो, तो ये मैंने दो कोड डाल दिया है कमेंट्स में ऋग्वेद. Okay, Chilwell, you know what? He will play. He is number 1 for Chelsea. But the problem is in preseason, the way, I know it's a preseason, but I think Alonso has looked much more confident, much more fluent than a Chilwell. That's the only thing. I'm playing it on form, and of course, Alonso might just leave Chelsea. Yes, that might happen, but still I'm playing Alonso because of preseason. He's done better. And I think meritocracy, needs to be given there, right? Plus, we are playing Everton, who are not defensively so sound. I think Alonso makes more sense in this game, in my opinion. Sterling will lost that position. I don't know, man. He did very well against Udinese. Thoughts on Brighton player McAllister? Again, we'll come to Brighton match and we'll talk about that, Ayush. Hope referees don't spoil games. बिल्कुल. भाई ऑस्कर कैसे हो? दोनों ही है यार, दोनों ही FPL कोड है, दोनों ही है. एक है लीग का कोड और एक है कप का कोड. आप और लिंक भी डाल दिया यार, आप लिंक में क्लिक करो ना, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इतना मुश्किल नहीं है. डिस्क्रिप्शन में पहले ही 3 लाइंस में डाला हो यार, मैं लिंक डालो दोनों. आप 2 सेकंड लो, रीड करो, आपको पता चल जाएगा. मेसन माउंट का बेस्ट पोजीशन डिस्क्राइब करो ना भाई. ही इज अ नंबर 8. That is the best position. Even Conor Gallagher, they play best in a 4-3-3. In that basically as an attacking midfield / basically box to box kind of thing, वहां पर best खेलता है, because उसमें he can kind of move. He has those turns which Mason Mount does. He has a room thoda, so that is the best position for Mason Mount in my opinion. Which position Chelsea need to recruit the most this season? You know what, it has to be the defense यार. हाँ, इसलिए मैंने एस्पिलिक्वेटा और अलोंसो को डाला है. तो you can imagine we need defenders for sure. They are not the best, right? They have done great for Chelsea. At least Aspilicueta for sure. Even Alonso to some extent, I would say. But we need an upgrade there. I think Chelsea United will be out of 4. Oh, Subhash, very bold call there, but it's your call, so fair enough. Sterling, okay, City, but he missed so many chances. That's why we got Haaland and Alvarez. Fair enough. You know what? That was one reason, but also Sterling, उनको भी चाह थी ना कि यार वो शुरू करे गेम्स. So it's a bit of both, I would say. हिमांशु टॉक इन द हाउस. न्यूज़ है कि CR7 संडे के पहले मैन यूनाइटेड को लीव करना चाहता है. अरे आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल सो सून, बट लेट्स सी. सर, पुलिस को स्ट्राइकर नहीं बनना चाहिए. नहीं यार, वो एक गंदा फिनिशर है आज के दिन में, कंपेयर टू बेसिकली हु द अदर ऑप्शंस आर. सो दैट्स द ओनली रीजन. हेलो तन्मय, कैसे हो भाई? चलो,
Okay, do an FPL deadline stream tomorrow. हाँ, already I've announced it. आप शायद लेट आए तो कनिष्ठ, लेकिन हम ज्वाइन कर, इनफैक्ट हम थोड़ा जल्दी करेंगे कल, ठीक है. We won't do a 7 p.m. We'll probably do that stream a little bit early. Yeah, Kukurea is definitely going to be coming in my opinion. By देखो, मैंने एक वीडियो निकाला था और क्लियरली मैंने शेयर किया उसमें एक ट्वीट जहां पर कुकुरिया के जो एजेंट है ना, वो बोले हैं कि यार fact is like this guy is moving and with a high 10 and all that. Fabrizio Romano has further बाद में वीडियो निकालने के बाद में Fabrizio Romano has also replied to that with basically thumbs up or something like that. तो मुझे लगता है this is a matter of time. It's just a matter of time. Colville का kind of exactly जो है फिगर कितना होने वाला है in terms of the price वो determine नहीं हुआ है, इसलिए they have not announced. और that's why they want to be sure that okay how come these guys are telling that agree हो गया भाई, अभी तक agree नहीं हुआ है. आई थिंक वो एक साइड से अग्री हो गया है, बस जस्ट दैट दे आर वेटिंग फॉर कॉलविल, बिकॉज वही कंडीशन था ना दैट वी विल बी सेलिंग कुकरिया इफ यू आर गिविंग अस कॉलविल. तो दैट्स व्हाई दूसरा साइड जो है वो अभी तक बातें चल रही है. ओके अजय, थैंक्स फॉर द कमेंट यार. अगेन विल कम टू अदर लीग्स, जब टाइम मिले तो डेफिनेटली विल कम टू अदर लीग्स. आज के लिए प्रीमियर लीग बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बुंडेसलीगा करेंगे. समबडी सेड पोर्चुगल, या मैं पढ़ा था आपका कमेंट, इट विल बी आइदर नैरो विन फॉर सिटी और ड्रॉ एट लंदन स्टेडियम. ओके चलो, विल कम टू दैट. मलंग सार जा रहा है यार, मलंग सार जाने वाला है. अगेन आई डोंट थिंक टुकल will be ready to sell him if we are not getting anyone. The fact is Kukurea is coming. That's why basically Malang Sar is going. Yes, they're not equal players, लेकिन लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट बैक दोनों ही खेल सकते हैं ना कुकुरिया. हाँ, नॉट आइडियली लेफ्ट सेंटर बैक, लेकिन खेल सकते हैं बैकअप में. Well, I don't think he'll be great at left centre back at Chelsea, but I think he can play there. I think he's rather more suited at left wing back. That's my opinion. But again, Kanish, आप बोल रहे तो सही है. मतलब I feel the way Chelsea play ना, we'll be very vulnerable on crosses and things like that. अगर कुकरिया खेलते तो that's the only reason I'm not going with that. Front three for Chelsea apart from Ziyech. Well, I just showed the team sheet. सुभाष आपने पता नहीं आपने देखा कि नहीं? I just showed it. So it will be definitely Havertz, Mount and Sterling. That's the front three. Definitely. आपके backups, Pulisic will be a backup. Broha can be a backup. Those are all backups, right? And Ziyech आपने already बता दिया. Who might just go to Manchester United? Let's see. अरे thank you यार योगेश, बिल्कुल much love. No centre back, big love. Oh my god. You know what? Breaking news यही है. A Leicester fan in the house. So obviously we'll have to share that. Fofana का, for people who don't know, भाई फेब्रिशियो ने बोला है 60 million pound is what we had bid, और लेस्टर कर दी है रिजेक्ट. As expected, 60 million pound was not their number. Their number was 80 million pound. लेकिन लग रहा है मुझे कि 70 million में the fact that Fofana himself wants to come might just change. लेकिन should we go for that, or should we go for rather say Kyle Walker-Peters at right wing back at 40 million, or Dumfries at 40 million, or play Reece James at right centre back? I think I'd rather go for the second one, at least for this season, until why? Because Fofana is brilliant, don't get me wrong, but paying 75-80 million for Fofana, I think is a little bit out of bounds. वो मेरा है just इतना. Okay, nice Ashish, nice to know. Do you still think City will win after happen? Why not, yeah? Why not? मतलब it's coming. It's charity shield. It's a glorified friendly. Yes, Liverpool deserved it. They got a trophy on paper. Yes, बिल्कुल, congratulations to them. But I think City are a great team. No two ways about it. And उनका 30 मैच था शायद प्री सीजन, अगर आप जोड़े ना, तो I don't think it was that they were that ready. So they will be good in my opinion. Or वो भी यार, they have signed a couple of new players. That, or again, we'll come to City match. So why am I talking so much about it? Right now, we are talking about Chelsea. So people, let me know comments. क्या होने वाला है Everton Chelsea? What is going to be the score line? What is going to be the score line of Everton Chelsea? I think Everton Chelsea, bhai. I think the fact that Everton right now, yes, they are basically conceding goals for fun. तो concede करेंगे. And we will have Sterling scoring his first on debut. I really feel that. तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर Chelsea win, but a narrow victory. Yes, I am going for basically a 2-1 victory because we'll concede. You know that as well. So 2-1 victory to Chelsea. It's away. It's at Goodison Park, where we haven't done too well in recent times. So वहाँ पर it will be difficult. Yes, it's the first season game हमारे लिए, लेकिन I think Everton defensively are very porous अभी. और Coleman भी out है, remember their captain is out. That is one reason. Okay, again FPL talks will be tomorrow शायद, big up भाई. लेकिन you know what, it depends on the price that you have, simply put, right? लेकिन हाँ,
4-1 market prediction. Chelsea lose. Okay, interesting. 3-1 Chelsea, 2-0. I love this. Rene, I have seen your messages. Don't worry about it. All good. Banter is okay. Big up to Mudit as well. Mudit, kaise ho bhai? Braithwaite denies to leave Barcelona. Wow, interesting. If Ancelotti matches, अभी hypothetical situations अभी बात करने का टाइम नहीं आशीष, हम आएंगे वापस उस पर, because again I have to finish 10 games in basically इतना टाइम ना. अरे कैसे हो भाई डरेन भाई, बिग अप, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑफ कोर्स, एंड यस मेंबर्स हु आर जॉइनिंग नाउ लेट, आपके लिए ये है अनाउंसमेंट कि देयर इज अ प्रेडिक्शन लीग, सो यू कैन बी एलिजिबल फॉर अ प्राइज. अगर हमारे होते हैं 50 मेंबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, राइट नाउ वी आर 15 मेंबर्स है, 15 में से 50 हो जाए तो बढ़िया होगा. तो 50 मेंबर्स हो, आप लोग को क्या करना है, आपको सिर्फ कमेंट करना है एट द एंड ऑफ द वीडियो दैट बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी द स्कोर लाइंस एवरी प्रीव्यू शो. ठीक है, वो करने वाला और बिफोर द किक ऑफ स्टार्ट्स, सिंपली पुट. अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली एफपीएल तो है ही, वो तो मैंने बता दिया, 10 के सब्सक्राइबर्स आप ले जाओ तो हम डेफिनेटली वहां पर भी यू आर एलिजिबल फॉर प्राइजेस. द कोर गेमर सेज 2-0 टू चेल्सी. ओके, व्हाट्सअप, ऑल गुड भाई, आप कैसे हो? और अगेन पीपल, एवरीवन हु हैज कम, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. भाई आज फीफा मुश्किल है, लेकिन वील कम बैक टू फीफा फॉर श्योर शायद. नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो ऑन नेक्स्ट ईयर. अरे Rene is like very salty right now. Rene, you're not such, you're not such generally. But koi nahi. Let me know if we have done anything bad to you, yaar. I thought Leicester and Chelsea have very good relations, especially with Brendan Rodgers being there. Anyway, well done, Bilkul, and I've already spoken about it in multiple videos. But thanks for Alex for reminding us that. Big up definitely to them. चलो फिर चेल्सी वाला मैं बोलता हूँ, मेरा तो प्रेडिक्शन आ गया. नेक्स्ट वाले पे जाते हैं भाई. नेक्स्ट वाला कौन सा करेंगे? स्पर्स साउथहैम्पटन. Spurs have done a madness in the transfer window. By Spurs have done a madness. लेकिन जो regime है, fitness regime, are they ready to kind of take on, that Conte effect? Conte is expecting them to do something crazy this season. You know it. But Spurs versus Southampton भी head to head काफी interesting है. That's why I'm talking in detail, भाई. देखो Spurs Southampton last season क्या होता है? Anyone remembers? Spurs lost 2-3 to Southampton. Yes, the recent game they lost 2-3. What a game. 2-3 they lost. And before that, the first leg tha, they drew with Southampton. So Southampton were unbeaten against Spurs last entire season. लेकिन आप जानते हो Southampton are one side जहां पर एक concede करते तो they just keep conceding. That's the problem with Southampton. लेकिन otherwise they are solid otherwise. तो देखते क्या होने वाला है. फॉर्म की बात करें तो भाई Spurs का फॉर्म is very similar to Chelsea जो हमने बोला है. They have won 2 games. They have drawn 1 game and 1 loss, which is more recent to Roma. Yes, Jose Mourinho beat Spurs. दुश्मनी निकाली in terms of Daniel Levy sacking him. But anyway, injuries भी है यार Spurs को. That might be an Achilles heel. तो very very carefully आपने select करना है आपकी FPL team, और not just that, prediction भी ऐसे सोच समझ के डालिए. Yes, it is at the Tottenham Hotspur Stadium. Spurs have had a decent preseason, not too bad, not too good, but they have Olivier Skip who's out. Olivier Skip is out. Their kind of main midfielder last season is out. Richarlison is suspended. Anyone remembers why? Richarlison is suspended for this game. He wouldn't start anyway, आप बोलोगे, but वही है, off the bench they may not have Richarlison for this game. Richarlison suspended because against Chelsea जब जीते थे ना Everton last season में, Richarlison ने घुमाया था फ्लेयर्स को और उससे मिला बैन उनको. यस, ये रिचार्लिसन लाते हैं भाई, ये सब मसाला लाते हैं, वही तो फन है रिचार्लिसन का. तो यस, रिचार्लिसन इज मिसिंग. रिमेंबर, सो डोंट पिक हिम इन योर एफपीएल टीम डेफिनेटली. लेकिन डाउटफुल है उनके न्यू साइनिंग बिसूमा इज जस्ट अबाउट डाउटफुल. सो दैट इज समथिंग कंसर्निंग. स्पर्स के स्किप भी बाहर है, बिसूमा भी बाहर है. तो हॉयबर्ग के साथ कौन होगा? आप बोलिए कौन होगा मिडफील्ड में? अगर डाउटफुल है तो आई डोंट थिंक स्टार्ट. ही माइट कम ऑन बिसूमा. और तांगांगा आई थिंक इज लिंक्ड वेरी स्ट्रांगली टू मिलान, डेड डिफेंडर. लेकिन अगेन ही मे नॉट स्टार्ट, बट इवन ऑन द बेंच वो डाउटफुल है इस गेम के लिए. लेकिन हाँ, साउथहैम्पटन कैसे करी है भाई प्री सीजन में? आई थिंक दे हैव डन डिसेंटली. अगेन लास्ट सीजन दे एस्केप रेलेगेशन, कंग्रेट्स टू देम. दे हैव अ few good young players. लेकिन साउथहैम्पटन हैव गॉट 1 victory in 5 friendlies. That is nowhere near very good. ठीक है, and that 1 victory came against Monaco और 2 ड्रॉज किया है साउथहैम्पटन ने. सो एवरीवन, ये सब देखकर आप बताइए स्पर्स वर्सेस साउथहैम्पटन स्कोर लाइन क्या होने वाला है दिस वीकेंड. बेंटेंकर कैन कम इन, व्हाई नॉट यार. मुझे लगता है ना, गोइंग बाय प्री सीजन मैंने ये देखा है, और दे आल्सो नीड अ बायर फॉर दिस गाइस. सो इसलिए ये वाला खेलेगा शायद, बिकॉज ये थोड़ा
मार्केट में डालना है इन लोग को। तो मैं एक्चुअली बेंटनकर नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, देखते हैं, मैं देखता हूँ किसको। आई फील गोइंग बाय प्री सीजन ये खेलेंगे, हैरी विंक्स। तो हैरी विंग्स एंड हॉयबर्ग विल प्ले दिस गेम इन माय ओपिनियन। मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज साउथहैम्पटन, इसलिए वो चांस लेंगे, लेकिन लुक एट दैट लाइनअप अदरवाइज। हाँ, एमरसन एट राइट बैक मैंने डाला है। अगेन आप लोग बोलिए, डू यू अग्री विद दैट? यस, स्पेंस हैज कम, लेकिन प्री सीजन में आई डोंट थिंक स्पेंस ने शुरू किया है गेम्स काफी। सो आई थिंक it will be either Emerson Royal or Doherty. One of them will start right wing में, left wing में तो Perisic, without a shadow of a doubt वो रहेंगे। और बैक थ्री आर, yes, they finally have got Romero fully fit, so he'll be good of course. So going by this lineup, playing against Southampton, जो मैंने बोला है in terms of the form, in terms of the history, recent history, what do you think is going to be? Arit, thank you for coming on again. Do not forget to subscribe as well as definitely like the stream. Definitely helps. और हमारा दूसरा चैनल भी है, Almighty Sports Plus. It is always tagged in the description below. Please do consider subscribing to them as well. Longly to start ahead of Sanchez नहीं यार यश, the fact is he is on loan, ठीक है। और secondly आप प्री सीजन अब देखो तो Sanchez, Dyer और Romero almost started every game, तो ये continuity में believe करते हैं कॉन्टे, तो I think he'll just continue with that in my opinion. Ryan will start in place of Perisic. Okay, interesting. 3-1 Spurs, okay. Son brace incoming. Leo Swapnin बोल रहे हैं, okay. I don't know why, but Wing से expectation ही नहीं होती अच्छे परफॉर्मेंस के लिए यार, लेकिन वो वर्क हॉर्स तो है, तो वर्क हॉर्स चलेगा इस गेम में नहीं, क्योंकि इतने सारे अटैकर्स हैं उनके पास। तो अगेन साउथहैम्पटन है, एट होम है, दैट्स द रीजन। ओके, कॉर्नर टू वेस्ट हैम, इंटरेस्टिंग दैट। ओके, लेट्स सी बेंटेकर, पेरिसिच विल स्टार्ट, यस पेरिसिच विल डेफिनेटली स्टार्ट। तो मैं कमेंट्स ही देख रहा था अभी, तो यहाँ पर देखिए मैं जा रहा हूँ भाई स्पर्स। द फैक्ट दैट उनका प्रीसीजन इतना बढ़िया नहीं रहा है सिमिलर टू चेल्सी, आई एम गोइंग विद मे बी साउथहैम्पटन का भी अच्छा नहीं रहा है, तो यार आई एम गोइंग विद स्पर्स विन फॉर श्योर। लेकिन स्कोर लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, स्कोर लाइन सब लोग कमेंट कर दीजिए। आई थिंक आई एम गोइंग विद अ स्पर्स विक्ट्री बाय 3-1। सो 3-1 होने वाला है ये, स्पर्स वर्सेस साउथहैम्पटन। रॉनी प्लेज या आज डबल स्ट्रीम है क्या यार? आज 8:15 को वी आर ऑन डेली फुटबॉल मैडनेस एंड एट 9:15 वी आर ऑन टॉक फुटबॉल HD, तो उनको भी शाउट आउट है डेफिनेटली। दैट्स द रीजन मैं डबल स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ ऑन माय चैनल, राइट? बट डेफिनेटली हमने काइंड ऑफ किया है, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द डे। एक वीडियो निकाला था एट नून, check it out as well, सुबह एक्चुअली, राइट? 4-0 स्पर्स, गंदर बोल रहे हो, okay? 3-1 टू स्पर्स, 3-2 स्पर्स। ये बढ़िया हो गया ध्रुव, आई होप 3-2 हो जाए, बढ़िया मैच होगा देखने में। Why I'm going with 2-1 to Spurs. If they achieve this scoreline, Kante will be more than happy. Kante? पता नहीं। Anyway, oh, you mean Conte? Okay, I thought Kante. थोड़ा मिक्स हो गया मैं। एंटोनियो कॉन्टे, फेयर इनफ शायद, बिग अप भाई आपको, बिल्कुल। तो यार ये हो गए हमारे कितने मैचेस हमने कवर कर लिया भाई, 4 प्रॉपर मैचेस कंप्लीट कर लिए आपने। अभी आते हैं वेस्ट हैम मैन सिटी भाई, द बिग वन, वेस्ट हैम मैन सिटी। आई थिंक विच इज दैट एक मैच जो आप रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जस्ट एज अ न्यूट्रल दिस पर्टिकुलर वीकेंड? आप बोलिए विच इज दैट एक गेम जो आप देख रहे हो कि विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम? और वही मैंने पोल में भी डाला है कि यार विच टीम माइट गेट अ सरप्राइज? इज इट मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट वेस्ट हैम? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो क्या सोचते हो आप लोग, बिकॉज both have had kind of average pre-seasons. हाँ, मैन सिटी बीट बायर्न म्यूनिख, ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी गुड विन, वहां पर हालैंड स्कोर किए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैन सिटी ने कुछ उखाड़ा नहीं है प्री सीजन में। हाँ, इट्स मैन सिटी दो, तो मैं प्री सीजन क्यों तो जज कर रहा हूँ, आप बोलोगे डेफिनेटली। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था वेस्ट हैम मैन सिटी, एनीवन रिमेंबर्स? इट वाज अ 2-2। यस, रिसेंटली इट वाज 2-2 विद मारेज मिसिंग अ पेनल्टी, और वो एक क्रूशियल पॉइंट था सीजन का, जहां पर लिवरपूल सोच रही थी अरे भाई यहाँ पर वी कैन गेट अ क्वाड्रुपल। I think that Mahrez miss was huge for them, right? But again, 2-2, that was a performance last time. लेकिन having said that, before that City ने जीता था 2-1 against West Ham. But West Ham के injuries है इस बार, yes, injuries है। एक है Aguerd is the new signing and unfortunately he's got a long term injury, I believe 2-3 महीने के लिए शायद बाहर हो। Issa Diop is also out, तो FPL managers do not pick Issa Diop or Aguerd तो definitely not for long term as well। लेकिन सिटी के I believe Laporte और स्टोन्स थोड़े से डाउटफुल है। Laporte, again, people do not pick Laporte or Stones for this weekend's playing 11 if you are City, मतलब City के प्लेयर्स अगर है आपके FPL टीम में, because भाई आपको पता है काफी चेंजेस होते हैं, they'll come on as sub etc, so don't
बिकॉज डाउटफुल है. डाउटफुल वाले प्लेयर्स है ना, डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से. हाँ, you can take a risk and go for it, but sometimes I feel that when you're starting the season, rather don't go for it. Hello Nikhil, कैसे हो भाई? Always good to see you. And yes, people, do not forget to like and subscribe. अगर आपने नहीं किया है तो please consider doing that to both our channels. Certainly means a lot. And of course, it's a long season. Season has just begun. The target for this week, in fact, was 5K. So hopefully you get us to 5K in this week. Yeah, come on, we can definitely get there. Let's get to 5K. And of course, give us feedback if you're not liking something. We do a lot of short videos as well, but hopefully we get to 10K as well this calendar year, right? So again, FPL link is below, as well as basically Discord server link. Do join. Would be interesting to see Bowen and Skamaka. Yeah, that is the point now. Now West Ham का बहुत interesting हुआ है. The fact is they are keeping, of course, they are keeping Declan Rice, they are keeping Bowen, ठीक है, और Skamaka आ गए. तो will they play Skamaka? That is the biggest question. हाँ, उनका प्री सीजन भी, like I said, it's been mixed. काफी सारे मैचेस खेले. That is the difference between Man City. They have played a lot of matches. So maybe they are more ready in a sense, or of course it's at West Ham का stadium. So hopefully that will help them. लेकिन Skamaka for me may not start in this game. हाँ, eventually they might go for two up front. इन सम गेम्स वो जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ना स्कमाका और एंटोनियो दोनों खेलेंगे. एंटोनियो कैन प्ले वाइड, बट यार यू नो एंटोनियो इज प्रॉपर टारगेट मैन. Won't matter if City lose, they will still win league. Oh, bhai sahab. Man United will lose 4-0 again. It's gonna be same all over again. Okay, next game हम Man United का करने वाले cover. Please wait for that. Chelsea versus Palace. भाई हमने कवर कर लिया. यश आपने लेट ज्वाइन किया है, बट कोई नहीं. You can give your predictions for that. We have covered a little bit about that for sure already. Okay, Chelsea was Palace. आप बोल रहे हो Arsenal was Palace. Chelsea was Everton. I don't know. Okay, you're talking about the best game in this weekend. By again, yes, you might want to comment it again, because it's Arsenal playing actually Palace and Chelsea playing Everton, and both are away games. Big up to Manav, yaar. Manav, kaise ho? Big up again, member of Almighty Blues FC. People, again, members के लिए we have a prediction league. So get us to 50 members and you are eligible to win a prediction league. और आपको क्या करना पड़ेगा? At the end of every preview show, for example, अभी हो रहा है ना, at the end of this preview show, जो 10 मैचेस है, आपको सिर्फ कमेंट करना है पड़ेगा. Like for example, Everton 1, Chelsea 2, Palace 2, Arsenal 3, ऐसे लाइन में just 10 एक कमेंट डाल दीजिए, और I will definitely be updating the prediction league. Again, the condition being that और members चाहिए, लेकिन definitely it's a win-win. Hopefully you'll get a prize as well. Manav, come on. Jaren भी. When will Calvin Phillips play? यार Calvin Phillips को bed in करेंगे. Pep is very good in rotation, I must say. तो he will bed in for sure, लेकिन again starting में मैं नहीं देखता यार वो आएंगे. That's my opinion. मैंने शायद अच्छा मैन सिटी का 11 नहीं दिखाया शायद. चलो, FPL मैनेजर्स याद रखिए, ये मेरा प्रेडिक्टेड 11 है फॉर मैन सिटी. तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ पीपल, एंड अगेन बाय 100 पीपल वाचिंग, आई होप एवरीवन इज लाइक द स्ट्रीम एंड एवरीवन इज सब्सक्राइब. Doesn't take a buck. Please consider doing that. We are on the road to 5K. It helps a lot, right? यहाँ पर देखिए, तो this is my starting 11, and yes, City fans especially, आप बोलिए यार, how would you see this? Would you see that भाई Grealish wasn't so convincing in that Community Shield game along with Haaland, और आप चाहोगे एक लेफ्ट फुटर रहे on the left hand side with Haaland getting the crosses? Maybe you'd start with Foden, maybe. लेकिन Alvarez did very well. Would you start him? In my opinion, he won't start. That's just my opinion. But Bernardo Silva, yes, काफी links हो रहे हैं अभी भी, लेकिन come on, he has to start. What do you think so? Nathan Aki, yes, the fact is Laporte is not 100% match fit. Same with Stones, इसलिए हम start करें Nathan Aki के साथ. देखते हैं. Foden 100%, ध्रुव बोल रहे हैं. Okay, Foden might get the start. Yeah, I agree. Foden might come in place of Grealish, right? Dhruv, what do you think? Foden, Alvarez, not Grealish and Mahrez तो रहेंगे यार मेरे ख्याल से. Mahrez had a decent game, नहीं? That Community Shield game. Anyway, Foden starts in place of Grealish for me. Alvarez comes in Mahrez later on. बिल्कुल. I 100% can concur with Manav on second thoughts. ये मैंने डाला है ना, क्यों? क्योंकि एक होता है, एक flow होता है. तो I just thought that Grealish and Haaland का maybe Pep is trying something to kind of work them both together, But again, it's West Ham away, so I kind of agree with Manav on second thoughts. Aspi भाई, क्या है Aspi के बारे में क्या? You're asking what is the news? News अभी कुछ नहीं यार. As per what I know, there's no news. He is starting. मैंने आप शायद रेट ज्वाइन किया था डेरेन आज भाई, कोई नहीं. तो for me, he's starting this weekend का game is starting. Simple as that.
मैन यूनाइटेड 1-2 लूज, अगेन मैन यूनाइटेड गेम अभी नहीं आया भाई, अभी हम बात कर रहे हैं सिटी और वेस्ट हैम जो अभी गेम सिटी के लिए। बार्सिलोना सेट टू साइन फॉर सिल्वा, यार भाई हो सकता है दे माइट साइन, बट अगेन इन माय ओपिनियन पेप विल नॉट लेट हिम गो सो इजीली। यस ही विल नॉट बी इन प्लेस और ही विल नॉट बी ब्लॉकिंग इट मूव, लेकिन इस वीकेंड में आई थिंक सिल्वा हैज टू स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई मीन। इतना जल्दी नहीं होने वाला है, लेट्स सी। एसपी डाल दिया भैया, ओ ओके ओके, मेरी गलती होगी, सॉरी यार, रियली सॉरी। आई थिंक मैंने गलती से डाल दिया है, सो ऑब्वियसली यार यू पीपल नो इज वॉकर। हाँ थैंक यू, सॉरी डेरिन एंड मानव, थैंक यू एज वेल। लेकिन हाँ भाई इट्स वॉकर, आई मेड अ मिस्टेक, होता है मिस्टेक्स। आई मेड अ मिस्टेक, इतने सारे लाइनअप चला ना तो एसपी गलती से डाल दिया। अगेन ये मेरा पता नहीं, मेरा मन बोल रहा है एसपी शुड स्टे इन द प्रीमियर लीग, मे बी दैट्स व्हाई, नॉट इन मैन सिटी दो, बट एनीवे थैंक्स एज वेल, एसपी की जगह वॉकर, बिल्कुल भाई वॉकर आएगा। थैंक यू यश एज वेल, थैंक यू। अरे भाई सिटी की टीम में एसपी है, थैंक यू शायद एज वेल, कोई नहीं यार हो जाता है। गलती हो गई यार, माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए, होता है कभी कभी, आदमी हो, कोई नहीं। मच लव टू एवरीवन एंड लेट्स प्रेडिक्ट नाउ, वेस्ट हैम मैन सिटी वाज व्हाट इज द स्कोर लाइन? इतना सारा हमने किया है। यार भाई चिराग कहाँ हो भाई, आजकल आते ही नहीं हो, आए हो, एक गलती गलती होगी तो आ गए बस। चलो भाई, बिग अप टू चिराग भाई, much love to football medico as well यार, football medico is going to be definitely uploading a lot of videos hopefully। भाई बात करते चिराग, काफी दिन हो गए, but hopefully you will come on very soon। नो कुकरिया टू सिटी एंड जिंचेंको ऑफलोडेड, अब सिटी के लिए प्रॉब्लम होगी क्या अंकित भैया, निपुण पूछ रहे। यू नो व्हाट, I think they'll be fine. I think they'll be absolutely fine. It's just that they have to make sure that rotation अच्छा हो। Yes, 5 substitutions है, they have to basically make sure that everyone is fit and all that, मैं agree करता हूँ, लेकिन options है उन्हें, उनके पास options क्या है, कैंसेलो कोई आ भी गया ना लेफ्ट बैक, मैं तो बोलूंगा कैंसेलो स्टार्ट्स, ही इज सो गुड एट लेफ्ट बैक। Yes, the way City play, he joins in midfield and whatnot, right? So I will say that Cancelo starts anyway। और बैकअप के लिए नेथनाकी है। नेथनाकी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंटर हाफ में डजंट स्टार्ट, इस वीकेंड में मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट्स, बट देन यू विल नो दैट नेथनाकी विल डेफिनेटली बी अ बेंचर, राइट? तो वो चाहेगा यार कुछ मिनट्स, तो शुडंट ही बी द सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक एटलीस्ट, द फैक्ट दैट वो रहा है और ही इज नॉट कम टू चेल्सी, रिमेंबर। सो आई थिंक दे विल बी फाइन। हाँ लेकिन again that creativity element of Nathan Ake is a little bit less compared to maybe a Zinchenko, but defensively वो better है, तो I think overall it'll be okay, don't worry about it। Mark my words, Rodri का worst season जाने वाला है यार भाई, I kind of disagree man, again आपका prediction है तो I cannot kind of fight with that, लेकिन हाँ the fact is that Rodri has been one of the most underrated players in football in the last year in my opinion। मतलब स्पेन के लिए भी सर्जियो बुस्केट्स is awesome, I know that, and he's a captain, but the reason why he plays in my opinion is because of him being kind of equally good, plus he's the captain। अगर वो basically captain नहीं होते तो there was a fight कि यार रॉड्री शुरू करेंगे स्पेन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे यार ओके, अंकित जी और रोमानो इन द हाउस। आज इन क्या बोल रहे हैं, अरे भाई 2-0 टू सिटी, ओके चलो 2-1 सिटी, 1-0 लॉर्ड चिराग इन द चैट, बिल्कुल 2-0 सिटी विन, हालैंड एंड फोर्डन विल स्कोर, ओके। यू नो व्हाट, यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई वेस्ट हैम दे हैव टू गेट थिंग्स गोइंग फ्रॉम वीक 1, यू नो व्हाई, क्योंकि वो है उनका कॉन्फ्रेंस लीग, रिमेंबर। तो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट हैम टू काइंड ऑफ एज इन फाइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर वो चाहते हैं। एंड अगेन वेस्ट हैम फ्रॉम व्हाट आई नो द काइंड ऑफ साइनिंग्स दे हैव मेड, मुझे लगता है the kind of people they have retained, their ambition is like definitely top 7 again, or they have to kind of get points, so it can be a draw, I don't know यार, कुछ कोई draw नहीं बोल रहा है यार, I am saying let me call it a draw, I am going for a draw। हाँ I am saying Man City, मैंने कर दिया यार प्रेडिक्शन वीडियो कल किया था, उसमें तो बोला Man City विनिंग द लीग, बट पहले वीकेंड में लीग नहीं जीती जाती है, तो मैं बोलता हूँ इट बी अ ड्रॉ। द फैक्ट दैट मैन सिटी अभी भी थोड़ा फिगर आउट कर रही है हाउ टू प्ले एंड हालैंड इज नॉट लुकिंग 100%, तो आई फील दैट देयर विल बी गोल्स, इट बी हाई स्कोरिंग मैच, बोल रहा 2-2 ड्रॉ, हाउ अबाउट दैट, मजा आ जाएगा भाई 2-2 ड्रॉ एट वेस्ट हैम का स्टेडियम में। अरे भाई गम यार, बिल्कुल गम, गम के चक्कर में मैंने डाल दिया और कुछ नहीं है, जाने वाला है, लेकिन नहीं अभी के लिए तो है, तो मैंने डाल दिया है, क्या क्या करे। Maxwell corner to West Ham, yeah, that will be brilliant. लेकिन does he upgrade them? Not really, but he's a great option definitely। City pulled out of Harry Maguire, okay,
अरे कोई नहीं यार, मजाक कर रहा था, कोई नहीं चिराग, मच लव यार. ओके. Ironically, City has such low depth in the season when five subs are allowed. Yeah, that's true. That's a great point. City की इतनी बड़ी स्क्वाड नहीं है. Again, we did a season preview for City, for Liverpool and whatnot. तो उसमें हमने बात किया था City has actually one of the smallest squads. But on difference being in that smallest squad, they have one of the best squads in terms of the backups. क्योंकि backups arguably शुरू करेंगे. Even in this match, हमने बात किया. Like Foden, he should start, you would say. Grealish, he should start. Mahrez should start. Alvarez, based on form, he should start. भाई आप definitely, you can kind of argue that, right? लेकिन हाँ, even in defense, like, John Stones, Laporte and Ruben Dias, तीनों हैं. Don't know why I feel Rodri will score a trademark outside of the box banger to silence the London stadium. Rodri always plays well in London. Arsenal fans, flashback please. Yes, I remember that game. बिल्कुल भाई, Rodri ने निकाल दिया अपना टी-शर्ट. I remember that very well. 2-1 वेस्ट हैम. भाई साका तो ऑलमोस्ट ले गए थे वो मैच, लेकिन यू नो व्हाट, दैट वाज अ ग्रेट कम बैक फ्रॉम रॉड्री इन दैट मैच. 2-1 टू वेस्ट हैम. ओह, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट यहाँ पर. ओबामयांग क्या सही रहेगा भाई? ओबामयांग ऑफ द फील्ड ही कैन बी अ प्रॉब्लम, वी ऑल नो दैट. लेकिन वही टू बिकॉज ऑफ इट, वही नेमार का जो बात की थी, आई एम नॉट टेइंग दैट नेमार एंड ओबामयांग सेम क्वालिटी. मैं बोल रहा हूँ नेमार एंड ओबामयांग दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो हैव प्लेड इन द टुकल एंड दोनों के ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स होते हैं. बट ओनली रीजन आई माइट स्टिल गो फॉर ओबामयांग इज बिकॉज ऑफ टुकल नोइंग हिम वेरी वेल. दैट्स द ओनली रीजन. बट अगेन कॉस्टली हो गया, बहुत कॉस्टली होगा. आई डोंट थिंक विल कम. फोफाना भाई 60 मिलियन तो रिजेक्ट कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है. आई फील दैट 70 मिलियन में आ जाना चाहिए. क्या लगता है चिराग आपको? आई थिंक 70 मिलियन इज व्हाट आई एम कॉलिंग. लेकिन आई हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट भाई इतना ज्यादा पैसा खर्चोगे ना तो वही होने वाला है, टूकल का जो लैम्पार्ड का हुआ, एज मच एज आई हेट टू से इट. तो आई फील नॉट जस्ट बिकॉज दैट, 5 महीनों के लिए आप रुको, डायरेक्टर फुटबॉल लाओ, ठीक से स्काउटिंग करो, प्रॉपर प्राइस पे आप लो, तब तक आप रीस जेम्स खेल सकते हो राइट सेंटर बैक. आप या तो लेफ्ट सेंटर बैक आप कुकरेया भी खेल सकते हो. आई एम मोर पॉजिटिव अबाउट कुकरेया देन फोफाना टू बी ऑनेस्ट. और गेट डेंजन डमफ्रीज और मे बी काइल वॉकर पीटर्स, दैट्स माय प्रेफरेंस. लेकिन फोफाना इज ब्रिलियंट. अगर आ जाता है, मेरे पैसे थोड़ी है तो आ जाओ यार. डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी डेफिनेटली वो अपग्रेड करता है भाई. नो टू विज अबाउट इट. एसपी इज ब्रिलियंट बट नॉट एज गुड एज फोफाना राइट नाउ. 2-1 to City, tricky encounter definitely. Okay, 2-1 to City. Darren भी बोल रहे 4-1 City, Alvarez, KDB, Haaland 2. Okay, wow. 2-2 because of yeah, City slow starters. Yeah, Rahul वही, मेरा भी वही था. 2-all में जा रहा हूँ, देखते क्या होने वाला है. Aspi to renew with Chelsea just in by Romero. Wow, wow, that's great news. Again, मैंने डाला है Aspi को City के रैंडम में गलती से, लेकिन maybe it's good omen. I don't know. Let's see if it actually happens. Haaland wins the Golden Boot. Yeah, again हमने किया था prediction for the entire season. Rene, I think you missed it probably, but anyway, do take a look. Aguero plus Sterling is greater than Haaland and Grealish. Yeah, right now yes, but again time will tell. Zuma Dawson versus Haaland. Oh yes, that will be a good one. Zuma देखना पड़ेगा यार, वहां पर देखना पड़ेगा कौन जीतता है. It will be a close one. अरे David Antaw Sports in the house, man. People, we did a video there on David Antaw Sports as well. Do check it out. Shout out Incl, definitely Chelsea fan in the house. City backup team can easily challenge for top 4. Wow, that's a big call, but you have a point. If you're given a choice, what club would you support in La Liga? Please say Atletico Madrid. I think because of Korea, क्या? वरना बस नहीं यार. मतलब to be honest, I have tried. ऐसा नहीं मैंने try भी नहीं किया यार. मैंने देखा है काफी La Liga. मतलब I've been watching La Liga for so many years as well. लेकिन वही है, somehow I've not got that addiction to La Liga compared to maybe a Serie A and maybe a Premier League. Just compared to that. So or addiction to a team, I mean, right? Addiction to basically football तो definitely रहेगा यार. लेकिन हाँ, it's a particular team. I am not got that. I'm honestly saying that. I'm not kind of sitting on the fence. That's a reality. Anyway, Barca not going for Aspi. Yeah, thank you again. मैन सिटी फॉर्मेशन यार मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, आपने शायद मिस कर दिया था स्क्रीन में. कोई नहीं, चलो. Guardiola has spoken of bias to City and reacts to trophies. Okay. Tuchel brings the best out of rogue players. Chelsea should go for Oba. Who's a stopgap solution for maximum 2 seasons. Let's be clear. Until then, probably Havertz can grow more. Yeah, बिल्कुल. I think that is why. मानो आपने तो सुना ही होगा, लेकिन काफी लोग ने सुना होगा that for me, Chelsea need to get an experienced striker. That is the thing that Chelsea चाहिए, because we need some finisher as well. Proper finisher चाहिए हमें. I will go with 1-1 to City. Interesting. चलो भाई, काफी ले लिया हमने predictions. भाई सेफ इन द हाउस.
अरे मैड्रिड प्लेयर से है, लेकिन एज अ क्लब आई एम नॉट बीन एबल टू गेट दैट अटैचमेंट, व्हाट आई मीन. लेकिन प्लेयर्स यार काफी लेजेंडरी प्लेयर्स है, इट व्हाट आई मीन. अल्वारेस प्लेयर ऑफ द ईयर, वाओ. मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट वाला कर देते भाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन, एवरीवन रिमेंबर्स क्या होता लास्ट टाइम, 4-0. यस, ब्राइटन वन 4-0 लास्ट टाइम, लेकिन उसके पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड बीट ब्राइटन. तो यहां पर इज इट अ शॉक अगेन? प्री सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड का हैज बीन क्वाइट गुड. आई एम इम्प्रेस्ड, सच में बोलूंगा. लास्ट 2-3 मैचेस में थोड़ा सा दे हैव अगेन गॉन बैक टू व्हाट दे वर. वो मैकफ्रेड को खिलाया एक मैच में, आई रिमेंबर. लेकिन द रियलिटी इज यार, आई थिंक ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग लास्ट 2-3 मैचेस में. आई थिंक पहले 2-3 मैचेस में यूनाइटेड डिड वेरी वेल इनफैक्ट. काफी फ्लोइंग फुटबॉल थी, एंड आई लाइक एरिक टेन हाग्स स्टाइल. आई डेफिनेटली लाइक इट. हाँ, he has gone on record saying that Ronaldo may not be ready. Ronaldo may not be ready, so Ronaldo might come off the bench. आप बोलिए इज दैट फेयर और नॉट. लेकिन हाँ, इंजरीज भी है. यस, एंथनी मार्शल अनफॉर्चुनेटली गॉट अ हैमस्ट्रिंग, आई बिलीव. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो एफपीएल मैनेजर्स डू नॉट पिक इन द स्टार्टिंग 11. आई वुड से रोनाल्डो एंड मार्शियल. रोनाल्डो फिर भी आप ले सकते हो, बिकॉज ही इज गुड इनफ टू कम ऑफ द बेंच एंड स्कोर, दैट राइट. लेकिन हाँ, एज अ स्टार्टर आई डोंट सी दैट दे विल बी स्टार्टिंग रोनाल्डो इन दिस मैच, बिकॉज क्लियरली इंडिकेट किया है एरिक टेन हाग ने. आई डोंट नो, माइट बी रॉन्ग, लेकिन दैट्स जस्ट माय कॉल. आप बोलिए. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन, भाई पीपल गेट इन योर स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्शंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल एज द स्कोर प्रेडिक्शंस. मुझे लग रहा है ना इसमें ये 11 खेलेगी. यस, थोड़ा बैक टू स्क्वायर वन वाला 11 है, बिकॉज अगेन इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, राइट. इसलिए वी आर गोइंग फॉर दैट. तो ये मुझे लग रहा है होने वाला है स्टार्टिंग 11. Varane, I know he had a slight injury right early on. Is Varane fit? Anyone knows that? I think Varane is fit. I've not read many reports. I think he's fit. Malaysia has looked good. Title Malaysia has actually looked good. So I think he would probably start. McFred आप देख रहे हो, because Eriksen he has not played in that role in preseason. Eriksen also he may not be match fit. So Eriksen आएंगे as a substitute. Donny van de Beek has played there, so maybe Donny van de Beek plays in place of McTominay. वो हो सकता है, because अगर flowing football चाहिए उनको. लेकिन again आप बोलोगे what about, I think they'll get the one of the youngsters. Their youngster has really impressed. Actually one of the youngsters is definitely Garnacho, what's his name, as in he's really impressed. जो है basically Messi and Ronaldo fan. We all know that. So he has really impressed, लेकिन I think he'll come off from the bench because Elanga is more experienced और वो खेले है pre-season भी. So I think Rashford starts up front with Sancho, Fernandes, Elanga. This is my 11. आप बोलिए, what do you think? Rashford will start. Yes, brilliant. 4-1 Brighton. Oh भाई साहब. Sancho will play right. Okay, fair enough. लेकिन हाँ, then who will play on the left hand side? Garnacho. Who will play on the left hand side? आप बोलिए. Because इस गेम में एंथनी मार्शल नहीं है. 2-2 draw, interesting. 1-0, 4-0 Brighton. Wow. यार मैं जा रहा हूँ. This is going to be, अरे शायद I know that what you're talking about. लेकिन अगेन थोड़ा जल्दी यार, I'm going on one more stream, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पर quickly. I may not take every comment towards the end. I am going for Manchester United. Definitely winning this game. Yes, क्योंकि I've seen a flow of football जो नहीं था for last season, and that is why I'm seeing, despite injuries of Martial है, मैं बोल रहा हूँ Ronaldo will come and score the winner. How's that? It'll be basically a 1-2 Manchester United winning it. That's what I'm going with. Let me know your comments in the chat, and of course, people, do not forget. There will be an FPL stream tomorrow early. थोड़ा और भी जल्दी रहेगा. I think we'll try and do it around 6 बजे. What do you think about it? Yes, Tanmay, the fact is I have a stream starting in 1 minute, yaar. So I may not take every comment. Much love to everyone as well. But you know what? हम कर रहे हैं stream 1.25 घंटा से, and we'll be streaming again tomorrow. So please do come back tomorrow on FPL. But do not forget to like the stream as well. Do not forget to like the stream. Do not forget to subscribe. Doesn't take a buck. Hopefully you guys get us to 5K. And yes, we are monetized on both the channels. But again, if you feel that you can contribute, definitely do. It'll go back to the channel upgradation. वो हो रहा है already. ठीक है. 1-1 United versus Brighton. Wow, interesting one. Graham Potter, Mauricio Pochettino will be the next Newcastle manager at the end of the season. Wow. Let's see. देखते हैं भाई. भाई again काफी comments मैंने नहीं लिया, तो we'll try and continue this next stream में, which is going to be tomorrow. I'll try and do a FIFA stream today, but I'm not too sure right now. So that's why मैं confirm नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन I am going on daily football madness अभी के, और we are also on Talk Football HD following that. So let's see क्या होने वाला है इस वीकेंड में. काफी सारा चीज. और yes, मैंने बुंडेसलीगा नहीं कवर किया है, तो अपॉलॉजीज फॉर बुंडेसलीगा फैंस भाई.
It is starting, but I was planning to do it, लेकिन time कम पड़ गया. So hopefully you guys put your Bundesliga, predictions as well in the comments below. Do not forget there's a prediction league, especially for members, and FPL for everyone. And Discord server join कर लिए, पता चलेगा आपको. चलो much love. अभी के लिए चलते हैं, bye.